दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर है 47, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल। नेक्स्ट है, कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। Important illustrations for exam: a writing is a document, a map or plan is a document, a caricature is a document. Admissions not conclusive proof but may stop. Fact bearing upon opinion of experts, fact not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent with the opinion of experts when such opinions are relevant. 6. In criminal cases, previous good character relevant. In criminal proceedings, the fact that the person accused is of good character is relevant. Fact judicially noticeable need not be proved. No fact of proof which the court will take judicial notice need be proved. Of oral evidence, so related in chapter 4. Proof if facts by oral evidence. All facts except the content of documents may be proved by oral evidence. Proof of documents by primary evidence. Documents shall be proved by primary evidence except in cases hereinafter mentioned. टेम्पररी इंजंक्शंस के लीडिंग केसेस हैं मार्टिन बर्न लिमिटेड वर्सेज आर एन बनर्जी और मनोहर लाल चोपड़ा वर्सेज सेठ हीरालाल, मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड वर्सेज कार्तिक दास। एडीआर लोक अदालत आईएमपी केसेस एंड सीपीसी कौन कौन से हैं? एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेज चेरियन बार्की कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेज यूनिस। प्रियम्बल के केसेस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। रीवेरुगरी यूनियन केस 1960 है, केशवानंद भारती केस 1973 है, सज्जन सिंह 1965 है, एसआर बोम्मोई 1994 है। आर्टिकल 17-18 के इंपोर्टेंट केसेस पूछे जा सकते हैं। पीयूडीआर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, बालाजी राघवन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की किस धारा में शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उल्लेख किया गया है? धारा 14 में। बीएनएसएस इंपोर्टेंट सेक्शंस हैं। क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड सेक्शन 6 में, कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन 8 में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 14 में और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन 15 में। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट सेक्शन 46 में है। सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस सेक्शन 71 में है। बेल बॉन्ड मीन्स इन अंडरटेकन फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। और नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट। Confession of an accused is admissible against co-accused if they are tried jointly for the same offence. A retracted confession cannot be made solely the basis of conviction unless the same is corroborated. Maxim res ipsa loquitur is a rule of evidence. The term negotiable instrument is defined under section 13. Principle of res judicata applies between co-plaintiff and co-defendant. By which article of the Constitution constitutional safeguards has been provided to public servants? Article 311. The gift of future property is void. A proposal when accepted can promise under section 2b. Which article of the Constitution of India confers power to grant pardons on the governor of a state? Article 161. Under the TPA Act, a mortgage by deposit of title deeds is called equitable mortgage. Under CPC, pleading does not include evidence. Under Indian Contract Act, where both the parties are under mistake as to matter of fact, the agreement is void. Appeal against a decree can be filed in High Court within 90 days. Under Section 143 NIA, trial shall concluded within 6 months from the date of filing of the complainant. The cognizance of offence under Section 138 of NIA Act can be taken by JMFC having territorial jurisdiction at the place where the check is dishonored by the bank on which it drawn. Under section provides that the offences under the Negotiable Instrument Act are compoundable. Section 147. Offence under the NIA are triable by JMFC. The rule that no tax shall be levied except the authority of law is embodied in Article 265. The period of limitation for filing a suit for a specific performance is 3 years from the date fixed for performance. The section providing for documents of which registration is optional under the Registration Act is Section 18. Under the Registration Act 1908, a registered document operates from the date of its execution. Immovable property has been defined in the Registration Act 1908, TPA Act 1908 or General Clauses Act 1897. So all of these. Other than bill, all documents should be presented for registration within 4 months from the date of execution.
The Registration Act 1908 came into force on 1st January 1909. Lease has been defined in Registration Act 1908 under Section 27. Who among the following shall appoint the Inspector General of Registration? State Government. Section 16A of Registration Act was inserted in year 2001. A bill can be presented for registration within any time. This section TPA deals with direction for accumulation. Section 17. If the donee die before the acceptance of the gift is void. TPA came into force on 1st July 1882. So according to Section 5 TPA, term living person includes company or association or body of individual. So video देखने के लिए thank you.